quickly about the webinar. My name is Vijayshri. I'll be your host for today. With me, I have Hitesh Joshi, who is a renowned personnel in the sports arena. He has had his own business, which is very focused into promoting football, and he's a co-founder of India Khelo Football. And also, I have Rajat. He is an educationist leader. He currently runs multiple businesses along with that, an online school, and he's here at the capacity of the academics bit that we were talking about. So we have the right mix, we have the sports, we have the academics, and we have both sorted out. So what I will start with is a quick introduction for both of you. That would be great. So Hitesh, you can start with you. You can tell us something about yourself, and then we'll move on to Rajat. Sure, sure. Thank you, Jeshri. Hi, Rajat. This will be an amazing conversation. We have both sports and academics at the other ends, but possibly both have done both. So, myself, Hitesh, I'm the founding member of India Khelo Football, and we have been in this trying to make professional careers for aspiring players since 2020. What we do is we basically integrate grassroots football with professional football, and we have assessed thousands of players and giving those pathways in the football arena. So yeah, that's about myself. Thank you so much for that, Hitesh. And I'm pretty sure there is more that you would want to talk about. So, I mean, he's been quite humble. He has done a great job in trying to make, sports mainstream. Well, specifically football mainstream. He has a great network of promoters that actually pick up these children, put them in clubs, and the reach is amazing. So, I know you're humbling that down, Hitesh, but I'm pretty sure our audience would like to know more. Thank you so much for that. We would move on to Rajat. So, Rajat, a quick introduction about yourself as well, please. Yeah, thanks, Vijay. Hi guys, this is Rajat Singhal, and I'm the co-founder of Cyboard Online School. So, the first and foremost thing that everybody thinks is that whether online schools exist, what is the difference between online schools and physical schools? So, basically, yes, online schools exist. We are not any online class. And prior to starting Cyboard, I was running a physical school, and then we saw an opportunity during COVID that if we want to take quality schooling across the country and across the globe, then it's only and only possible online, because that is the right platform wherein you can provide the access to best of teachers to everyone across the country without any compromise on the quality of education. And despite the fact that a child might be even sitting in Delhi or say Bihar or say Jammu and Kashmir. So today we can proudly say that we have students from every nook and corner of the country, and we are providing them a proper full-fledged online schooling so that there is no compromise whatsoever. Thank you. Thank you so much for that. And like Hitesh, Rajat has humbled himself down as well. He is an educational leader, a young leader, an entrepreneur, of course, have had multiple businesses. So he does come from a family legacy of 35 years of business, which has resulted. So Cyborg, he's so passionate about his current venture that he just talks about that. There is a lot more to Rajat than that, and we would love to have those expertise mixed in with what we are going to discuss here as well. So my first question, Rajat, is to you. Thank you both of you for those introductions, by the way. So Rajat, in your opinion, all right, in our country at this moment, do you think that sports and academics is a binary choice? I mean, what do you think? Is it a choice? And what do you think about that? Thanks for that, Vijay. I think Hitesh is a better person for the question, but then yes, I can probably. It's a very simple answer. I would say yes, it's a binary as of date, because even if you see students who are pursuing sports as as a career or a passion, they think, or the parents think about doing that post an age of 12 at the moment, right? So that is very evident that today if somebody is going into sports, they're only thinking about sports, and more so from a parent's perspective, एक वो दिमाग में सबके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब है, खेलेगा कूदेगा हो जाएगा खराब. So that thought process
it is imbibed so hard in the mind of people कि हमारे को आज भी as parents ये लगता है कि बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो कहीं पहुंचेगा नहीं. And for that reason, वो डर की वजह से, yes, academics and sports is a binary choice till the time there is a moment where either the बच्चा says कि मुझे sports ही pursue करना है, or the parents find that yes, this is the way, there is no other way. So as of date today, yes, it's a binary choice that या तो बच्चा स्पोर्ट्स करेगा या वो एकेडमिक्स करेगा, दोनों अभी तक नहीं होता. That's a great insight and आप बिल्कुल सही कह रहे हो. एक वो पॉइंट आता है जहां पर माँ बाप को ये लगता है कि आगे चल के क्या होगा. ठीक है, एक तो पहली बात तो छोटे बच्चों के लिए खेलना इज लाइक एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली बहुत कम लोग लेते हैं. And then when it comes to, and even I'm guilty of that. You know, I as a mother as well, my child wanted to play basketball. जैसे ही 10th के बोर्ड्स आने शुरू हुए, भाई अब आप छोड़ दो खेलना, अब आप एक साल इस पे मेहनत करो. वो एक साल का ड्रॉप स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है. और उसके बाद फिर 11th में खेल लो कोई बात नहीं, पर 12th में मत खेलना. सो आइडियली जो वो प्रोफेशनली अगर खेल भी सकता था, आई वाज माई सेल्फ दैट हिंड्रेंस एज अ पेरेंट. So Hitesh, Rajat had some great insights. What's your take on that? Do you think it is a binary choice? See, we will be fooled to say it is not a binary choice currently, because है वैसा ही है अभी currently, and we have seen this very closely. Like because our national finals where we showcase the players to so many professional clubs, 2024 clubs in India, we want to showcase the players, and there are always 20-30% of these players they drop out because उस टाइम पे प्रीलियम्स है, उस टाइम पे स्पेसिफिकली ग्रेड 10 एंड ग्रेड 12 स्टूडेंट्स वहां पे प्रीलियम्स है, अभी बोर्ड आने वाला है, वी कैन नॉट स्पेयर अनदर 2 days in travel, although we keep it a fully over day. So this though we have realized in our last 3 seasons that for parents, it is a binary choice and they feel कि कुछ एक ही चीज पकड़ के हम कर सकते हैं. Because in the pursuit of excellence, they feel that there is only one thing that the kid can do at a point of time. You know, Abhi, the reason for that, we can dwell deep into it. There are multiple reasons for this mindset to prevail in the society. But if answering your question whether currently it is a binary choice, currently it is a binary choice in the society. They feel कि और कोई option ही नहीं है, and that is probably because the ecosystem does not support presence of both at the same time. So yeah, so there is a binary choice. Of course, we can dwell deep into the discussion of to why it is a binary choice currently, but we cannot escape कि वो है ही binary choice अभी. Yeah, हाँ, more so I मतलब would say till today, till people aren't aware of this Exactly, balance, yes, it's a binary choice. it is a binary. it is a Very binary choice. Maybe for sure. As I said, personal experience, it is a binary choice at some point. And iske, as you said, you know, there are multifaceted reasons as to why this is there. It is social, it is social economic as well. It is more to do with our perceived knowledge of, you know, what sports can do. The seriousness of the country towards other sports other than cricket as well. You know, that's also quite evident and so on. See, things are changing. But then सी देखो प्रॉब्लम्स के बारे में तो हम बात करने लग जाए तो right, सुबह से शाम हो जाएगी. माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टू रजत. देखो प्रॉब्लम है, हमें पता है, राइट? और एट द बैक ऑफ द माइंड, चाहे पेरेंट्स हो चाहे आप लीडर्स हो, आप लोगों को भी पता है रीजंस क्या है. ठीक right. है, आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है? See, Vijay, what I feel is that for a child to pursue any passion, sports is one of them. And yes, sports more so because जितनी एनर्जी स्पोर्ट्स में कंज्यूम होती है, जितनी प्रैक्टिस स्पोर्ट्स में कंज्यूम होती है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है. एंड इफ आई टॉक अबाउट फुटबॉल इन स्पेसिफिक, so a child has to practice morning, evenings, they have to have proper nutrition, they have to have energy, they have to have time at their hand, they have to have that flexibility कि अगर साल के अंदर 3-4 बार टूर्नामेंट्स खेलने जाना है तो उस टाइम पे इट्स जस्ट स्पोर्ट्स दैट दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन. पढ़ाई छूटती छूटती है, एग्जाम्स कभी भी हो जाते हैं. सो दीज आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट आज मैं अगर एक पेरेंट माइंडसेट के हिसाब से सोचूं तो उनका डर शायद गलत नहीं है. वो डर इन वजहों से है कि वो जिस टाइम पे स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रहा होता है उसकी एकेडमिक्स छूट जाती है, Right. राइट? एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई इट हैज बीन अ बाइनरी चॉइस टिल नाउ. Right. But
Now there are options, and the biggest of them being an online school. Right. When we started at the online school, हमारा जो मकसद और विजन था वो ये था कि एक बच्चा, चाहे वो स्पोर्ट्स, चाहे वो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर, चाहे पैशन के लिए परस्यू करे, चाहे करियर के लिए परस्यू करे, लेकिन परस्यू जरूर करे. नाउ फॉर दैट दे हैव टू हैव टाइम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जो कि ऑनलाइन स्कूल के साथ बहुत आराम से मिलता है, बिकॉज आपको कम्यूट नहीं करना पड़ता. You are not at all fatigued when you are taking classes online, because आप घर पे अपने कंफर्ट के अंदर हैं. आपके एकेडमिक्स जो हैं वो लगभग लगभग 3 से 4 पीरियड्स के अंदर ऑलमोस्ट, अगर आप रेगुलर क्लासेस की बात करें तो आपके एकेडमिक्स सॉर्ट हो जाते हैं. एंड द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन स्कूल इज इट गोज वेर एवर यू गो. आज एक बच्चा जब टूर्नामेंट पे जाता है, वहां वो खेलता है मात्र वो एक मैच या 4 मैच जिस टाइम पे वो ग्राउंड पे होता है. Right. बट उसके आगे, उसके पीछे, उसके पास बहुत सारा समय होता है जब वो चाहे तो पढ़ाई कर सकता है. ऑल दे नीड टू कैरी इज अ मोबाइल फोन, राइट? So now, yes, a solution is available. The parents have a beautiful solution which was not available for ages. And अब हम confidently कह सकते हैं कि अब वो time आ गया है when sports do not need to be a binary choice. You Right. can have the best of both worlds. Oh wow, this is really an amazing thing. And you know what? We have somebody from the audience who wants to ask you a question. He says, "Till what age or grade does Cyborg address?" As in, what age and grade is Cyborg there? Rajat, if you can help us with that. So basically, when we started off Cyboard, we started till grades 5. Then we even keep on increasing grades every year until today we are serving till grade 8, and we'll increase the grades every year. So we were in no hurry when we started Cyboard. We are not a makeshift arrangement, and that's why we go slow. So it starts from nursery and it's still a grade 8 as of now, and we are increasing grades every year. That's great. That's great to know. So Hitesh, we heard of this solution that Rajat is offering, and he's talking about an online school. And what's your take on that? How do you think it fits in being a sports leader? Do Yep. you think that can be a possible solution? If not, what else could be a possible solution? No. So yeah, see, this concept of online schooling definitely caters to two specific problems which the parents have in their mind when they when their kid tells them that I want to pursue sports as a career. एक तो होता है the probability of success and the second is what if वाला part. The probability of success का ऐसा है कि academics has a very structured pathway. Like किसी को Right. इंजीनियर भी बनना है तो यू नो कि आप 10th के बाद साइंस ले लो, 12th कर लो, 12th के बाद 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाओ, आप इंजीनियर तो बन जाओ. For sports person that structured pathway is little difficult and इतना linear नहीं होता. So hence Mhm. parents always feel कि probability of success academics में ज्यादा है, तो अगर 9th grade तक बच्चा नहीं कर लिया sports में तो अभी चलो आप academics पे focus करो, अभी sports को passion में convert करो. That is one of the problem. The second is होता है कि what if अगर मैं डाला और वो sports में नहीं succeed करते हैं तो मेरे पास कोई backup ही नहीं बचता. And Right. what will my kid do? So it comes from a good heart. Obviously, everybody wants Huh. their to succeed in their life, and everybody wants to have a tried and tested approach. लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि if you try to force that that decision uh, without giving your kid a fair chance to succeed in sport, Mhm. then it then that becomes a problem because बच्चे को तो फुटबॉल वॉट एवर द स्पोर्ट इट इज, आई एम नॉट मी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, वो परस्यू करना है. लेकिन नाउ प्रायोरिटाइज academics prioritize हो गया है because you want to spend more want him or her to spend more times in academics, and that more time basically only happens in the जो अभी तक था before we got introduced to cyborg कि आपको physically स्कूल में जाना है, 8 घंटे बैठने ये करने. And like Rajat rightly pointed out, knowledge सिर्फ वहीं पे थोड़ी नहीं मिलनी है बिल्डिंग में. It can happen online, and that safety net which the parents want for their kid, even if their kid does not succeed in sport, वो safety net build हो ही जा रही है. It is not going away, and that Hmm. we felt when we got introduced to Rajat and Cyborg can only happen in an online schooling structure. वो physical schooling structure में हो Huh. ही नहीं सकता.
बिकॉज Right. आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी है, आपको लेक्चर जाने, आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, यू हैव टू गिव योर यूनिट टेस्ट, दैट टू यू हैव टू गिव योर यूनिट टेस्ट फिजिकली, एंड देन यू हैव टू गिव योर सेमेस्टर्स फिजिकली. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो स्पोर्ट को चाहिए, बिकॉज आपके टूर्नामेंट्स ट्रायल्स डज नॉट मैच योर एकेडमिक कैलेंडर, योर स्कूल के कैलेंडर. Right. 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 हैविंग सेड सो, आई एग्री विद रजत 100%. वो बाइनरी चॉइस था. The only thing is, with the advent of online schooling and people like Cyboard coming into it, it is no longer a binary choice, because now वो safety net बन रहा है. So those extra years which the parents can give to the kids to excel in sport will make a lot of difference in their career. वो जो टाइम देना पड़ता है, जो और 2-3 साल खींचने हैं आपको वहां पे, so that can only happen in an online schooling structure. So that's what that is my take, or adding to what Rajat has already said. Oh, that's really great to know that, Hitesh. And having both of you leaders here, and talking about this topic. See, and then there is something that is very closely that I observed, which I really wanted your take on that. And well, it's not digressing from the topic, but then it's also because we have a lot more parents who have joined in and all. यार अगर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन रेशियो देखो आप हमारी कंट्री का, है ना, as compared to person by person, like the amount of population that we have versus number of participants that we sent, it was mind boggling, uh, and Yeah. in a negative way, I really wanted to, Rajat, did you get a chance to see those stats? I'm pretty sure, as a leader for whom sports is so close, as compared to education as well, I mean, both balancing together, did you happen to get those numbers, and did you happen to see those, and what do you feel that is? So, Vijay, as I mentioned earlier also, हमारे यहाँ पर जब स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी सोचता है या एथलेटिक्स के बारे में कोई भी सोचता है तो वो 12 साल की उम्र के बाद सोचना शुरू करता है. So that is a biggest challenge. And if you talk about numbers, yes, it was a shocker for me when I went through the numbers, and I also made a video on that for my LinkedIn profile. So अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर 140 करोड़ की आबादी के बाद 117 लोग गए हैं, वेर स्लोवेनिया 20 लाख की आबादी पे भी 90 लोग भेज सकता है. And then when we talk about the number of medals, we all know that where we stand, right? A country like, अच्छा, and जब हम population में compare करते हैं, समझ लो China is the second highest population, but उन्होंने फिर 400 लोग भेजे हैं, and look at the number of medals that they're getting. Not that our sports person, or not that our the children here are not capable. The only difference is they start training young and they train hard. Yeah. बाहर के देशों के अंदर बच्चा 6 साल का हुआ नहीं, पहले तो वो 3 साल से ही किसी ना किसी चीज के अंदर दे स्टार्ट फोकसिंग, पुटिंग देयर चिल्ड्रन इन, राइट. एंड द मोमेंट दे आर 6 years of age, they are put into a specific sport wherever the liking falls, right. एंड वहां से उनको ट्रेन करना शुरू करते हैं रिगरस. Now the number of years that a child has spent into training and the way they have put those years makes a lot of difference. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हम इंडिया के अंदर हमारा फोकस वही जो अभी तक हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, हमारा फोकस यही रहता है, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करके खेल के कुछ नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है, खेल के बहुत कुछ मिलता है. आज आप मनु भाकर को नोटिस कर लीजिए, उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं. शी इज ऑल ओवर द प्लेस. एंड कोइंसिडेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ नेबर टू मनु भाकर. He has not been able to meet her, and the entire society has not been able to meet her since she has come back from the Olympics. That is the kind of recognition, that is the kind of things that you can achieve if you perform, and that is only possible if you start training young. Yeah. तो वो चीजें करना मैंडेटरी है. एंड यस, आज जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक लोगों के दिमाग में था कि बच्चे की पढ़ाई पीछे छूट जाएगी, अब आपके पास उसका भी सोल्यूशन है. तो प्लीज अब और कोई बहाना मत बनाइए कि बच्चे को खेलने क्यों नहीं देना. बहुत जरूरी है. हम बच्चों को कहते हैं लाइफ स्किल्स सिखाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में डालो, या लाइफ स्किल्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, जितने लाइफ स्किल्स एक बच्चा स्पोर्ट्स में सीखता है, एंड हितेश कैन टेल यू बेटर, he'll even tell you the skills that they learn, वो कभी भी क्लासरूम में नहीं सीख सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइस, थ्योरी के अंदर वो कभी भी पॉसिबल नहीं है.
It is only when they are into sports, team effort, coordination, hand-eye movement, foot-eye movement. You talk about things, and then सबसे बड़ी चीज, हैंडलिंग डिफीट इन लाइफ. Right. हम लोग इतना ज्यादा सक्सेस और जीत की बात करते हैं कि हम हारना भूल गए हैं. हम हार के सीखना भूल गए हैं, हम हार के खड़ा होके जीतना भूल गए हैं. Right. वो है जो स्पोर्ट्स सिखाता है, एंड वो सही. बहुत जरूरी है. I guess Hitesh would be able to tell us better and more about what all हम्म. do we learn from sports. Please Right. don't ignore हाँ. sports, don't put it down at all. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड अभी जो हम बात कर रहे थे इसका अभी एक लाइव है. आई हैव एन anonymous attendee, although they have put their name here, but it's a child. So what he says is, and Hitesh, the question is for you. I am taking this webinar without my parents. Recently, I was playing football professionally, and my father removed my academy. So I have a question that how can I make my career in football because I love football. So Hitesh, please answer that. या साहिल, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरेंट्स को तो लेके आना चाहिए था वेबिनार में. सो आपका मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था. बट या सी, योर फादर इज कमिंग फ्रॉम गुड इंटेंशंस दैट he wants you to focus on academics because uska probability of your success according to him would be high. Now how can you make a career in football is, it depends on what age you are. If it is in your schooling age, then Cyboard is there to help you. तो आपका फादर का जो सेफ्टी नेट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं आपके लिए वाया एकेडमिक्स, दैट इज विल बी देयर. एंड इफ इट इज बियॉन्ड 12 years ऑफ एज, देन यू पॉसिबली, सो यहाँ पे वही बात हो जाती है, हाउ डू यू मैनेज योर एकेडमिक्स एंड योर फुटबॉलिंग करियर बोथ. सो एक तो पहले उनको आपको मनाना ही पड़ेगा, विदाउट देयर सपोर्ट यू वुडंट, डेफिनेटली वुडंट बी एबल टू टेक अप फुटबॉल एज अ प्रोफेशन. नाउ वो एज पे डिपेंड करता है. 12th के नीचे, 10th के नीचे, यू हैव साइबोर्ड विथ यू, यू कंटिन्यू योर ऑनलाइन स्कूलिंग, put your excellence in academics over there and on field via football. But if Sahil it is says he's in class 10. Sorry. Sahil till says he's class in 10, class. yes, sorry, my bad, and beyond 10th standard, so you need to give trials यार, साहिल. जितना ट्रायल्स होगा और वो प्रोफेशनल क्लब्स की तरफ आप जाओगे, और वहां से अगर इफ यू गेट सम गुड पॉजिटिव फीडबैक रिगार्डिंग योर गेम, इफ दे आर रेडी टू टेक यू अप, then possibly you'll be in a better position to explain your parent or father that this is where I wanted to reach, and I'm good enough to pursue that. I thank you so much for that, Hitesh. I hope, Sahil, that answers your question. One more for you, Hitesh. Abir wants to say, how can someone get scouted to play professional football in Europe from India? So Abir, I'm sorry, Hitesh. Abir and everybody here, what we will do is we will take up a lot of questions Yeah. after, at the end of the session. So it is, if it is to do with what we are Yes. discussing right now, we would love to comment on it. However, we will take all of these questions at the end of the session once we are done. That would be So, great. coming back to what we were discussing, and see that Sahil's question was like so close to my heart that I really wanted you to kind of answer that. And see, this is where it comes from. बच्चे Yeah. ना um, वो पैशन और वो जो हिम्मत होती है ना जाने की, वो उसी टाइम उसी एज पर होती है Right. जहां पर उनके ऊपर. And again, like you said, parents are not wrong. I've been a victim of that, and I know a lot of parents who will not allow, like what Rajat was discussing. Yeah. हमें, don't you think कि sports से जो चीजें बच्चे सीखते हैं, जैसे रजत बता रहे थे, wouldn't that be the stepping stone of what they become in the future as well, even if it is not sports? What do you think 100%. about that? 100%. See, I'll give you a very, very live and practical example. When we conduct our own trials to scout exceptional players, 25% of the attributes that we see in a player are psychosocial attributes. Uska ground se koi lena dena hi nahi hota. What are the leadership skills? How is he behaving on ground? How is he, वो दूसरे players को कैसे लेके चल रहा है आगे? वो Right. अपने आप उभर के आ रहा है कि नहीं? Because we form team on ground. You have seen Vijayshri, we form team on ground. But as they play, within one half, there are one or two players जो अपने आप उभर के ground में आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि Exactly. वही captain है. You know? Then now among those people जिनको ये जिंदगी में कभी नहीं मिले और उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंड उसमें अपनी स्किल्स भी दिखाना चाह रहे हैं,
ये ये तो स्पोर्ट्स के अलावा हो ही नहीं सकता. हाउ एल्स कैन यू डिस्प्ले दोस कैपेबिलिटीज, और हाउ कैन यू लर्न दोस कैपेबिलिटीज? सो Right. 100% we have, like in our rating system as well, we have a list of psychosocial attributes which we focus on. And it is not that we are focusing on, the clubs also focus on. उनको उनको वो एट्रीब्यूट्स में स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटीज चाहिए. टेक्निकल टैक्टिकल तो सिखाया जा सकता है, वो तो बाद में दे कैन गेट ट्रेन्ड. बट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर इज समथिंग विच जो उभर के आता है, इट गेट्स बिल्ट. एंड स्पोर्ट्स बिल्ड्स दोस क्वालिटीज लाइक एनीथिंग. मतलब वी आई आई जेन्युइनली फील वो आपके क्लासरूम में बैठ के हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि टीचर ने एक सीआर सिलेक्ट कर लिया होता है, वो हेड बन गया है वहां पे. Or then you have to keep following the rules. Rather than in sport, you are put into an environment जहाँ पे सारे types के capabilities और skills उभर के आते हैं, and then you keep on learning by repeating it. Nobody comes and teaches you that on ground. The sport teaches you because you keep on Right. doing. आप देखो, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, दीज थिंग्स दे कम अप थ्रू स्पोर्ट. बच्चा सुबह 5:30 बजे उठ के ट्रैवल करके एकेडमी में जाएगा, वो सेम चीजें वो स्कूल के लिए नहीं करता है, बिकॉज वो इट इज ड्रिवन बाय पैशन. तो ये सारी क्वालिटीज वहीं से आती है, एंड देर इज नो अदर प्लेस देन ग्राउंड, बी इट एनी स्पोर्ट. आई एम नॉट ओनली स्पीकिंग अबाउट फुटबॉल. सो लाइक रजत सेट के हम लोग सिर्फ सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं कि एक्सेलेंस मिल जाए, लेकिन अगर 12th ग्रेड तक आप बच्चे को खेलने तो दो, possibly his personality will get shaped up because of Right. sports. Even if he does Right. not excel in, see, there are very handful of players who actually become professional players. Be it any sport, वो 0.0001% तक जाता है as compared to number of people who play. But in that pursuit of excellence, जो उसकी capabilities और qualities build होती है, that is unmatched, that they take them through their lifetime. अरे nothing but they at least know how to be healthy throughout their life. Yes. if Yes. if you see our founding team, आप देखोगे काफी सारे we have been playing, we were playing sports at our point of time. 12th के बाद चलो ठीक है, we also got pushed into engineering and whatever other stuff, but at least we know how to keep healthy. आज कोई बोलेगा तो मैं 3 किलोमीटर भाग के तो आ सकता हूँ. So at least that stays with us for lifetime. So Right. 100%. And I'll just give you another example because you had touched on upon Olympics. आप देखेंगे द मेडल टैली, सो ये कंट्री वाइज आती है. यू ऑल्सो सी द मेडल टैली यूनिवर्सिटी वाइज. एक यूके में एक यूनिवर्सिटी है, लब्रॉ यूनिवर्सिटी, वहां पे तो सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट एथलीट एंड एवरीथिंग इन यूएस जो काफी मेजर चलता है. Just Labro University in this current Olympics won 16 medals in Olympics. उनके Wow. students they are supporting. You know, वहां तो हो रहा है. Labro is the topmost sports university in the world. They are studying sports sciences. They are studying strength and conditioning. There are hundreds of courses which they offer. It's one of the topmost university in UK when it, or in the world when it comes to sports. 16 medal किए हैं. सो इट्स नॉट, so वो नहीं है भाई ने आगे जाके तो धीरे धीरे बोथ डेफिनेटली गेट्स मैनेज्ड. और वो लोग कर रहे हैं ना बात. इवन इन इफ यू सी यूएस, if you see the tally of universities who have won in athletics, in all these all these guys are being supported by universities. वो वहां पे पढ़ रहे हैं as a student athlete. So आगे जाके if you have something like Cyboard जो 10th ग्रेड तक, एंड धीरे धीरे आई एम श्योर यू विल वांट टू गो अप टू 12th ग्रेड, अगर वो सपोर्ट करते हैं उसके आगे, देयर इज एन इकोसिस्टम इन यूरोप विच सपोर्ट्स यू एज अ स्टूडेंट एंड एन एथलीट. बस इंडिया में वो वहां तक जाता नहीं है. आपको 6 5 वेन यूर 5 year old और 6 year old आपको घुसना पड़ता है स्पोर्ट्स में, विच इज द एज विच द वर्ल्ड इज मूविंग टू. अभी तो सिर्फ 7th 10th ग्रेड में आईआईटी के लिए ही सोच रहे हैं, वो स्पोर्ट्स के लिए भी 5th 6th year में घुसना पड़ता है. इफ देर इज साइबोर्ड, of course there is not, if there is cyborg who supports them till 10th grade and eventually 10th 12th grade, there are pathway ahead as a student athlete in US and UK, where they are students and they are athletes and the university is ready to support you in both the ways. और जो हो रहा है, it's a successful model in US. Oh, No, that's on this, that Hitesh, was I very can definitely guarantee you if there are a lot of students who want to pursue sports, and if we want to us to even jump up and bring up grades early in our life cycle, we'll definitely think about it. Even though we are going grade by grade, we can definitely think upon introducing more grades, and we'll surely go till 12th. There's no doubt about it. But we initially thought of going slow, but yes, after listening to you and
the way things are now shaping up, so we can very well think about even jumping onto grades if there is a significant pool of students who want to pursue sports along with academics. Great. So, Rajat, the next question was for you. I mean, we discussed so much about, and we keep hearing about Cyborg and how it can help, and it's a great choice. So it's an online school for sure. But जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए, आपने हमें ये बता दिया कि साइबोर्ड इज द सोल्यूशन, साइबोर्ड स्कूल, है ना? सो व्हाट आई वांटेड टू नो इज व्हाट इज दैट यूनिक थिंग, जैसे साइबोर्ड किस तरीके से स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों को Yeah. सपोर्ट कर पाएगा? ऑनलाइन है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी रहेगी, बट इसके अलावा और क्या? मतलब आज अगर मुझे अपना बच्चा साइबोर्ड में डालना है, और मैं इसलिए स्पेसिफिकली डालना चाह रही हूँ क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलना चाह रहा है और मैं चाहती हूँ कि उसका एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स बैलेंस्ड रहे, साइबोर्ड कैसे हेल्प करेगा? So Vijayashree, basically, मैंने आपको जैसे बताया, sports is one domain at which Cyboard looks. The greater vision of Cyboard is taking quality schooling. And when we say quality schooling, there are three things and three elements to provide seamless quality across the country or across anywhere. One is the management and the vision. How you are thinking of the school, where do you want to take your children? How do you think about their education and how you drip it down your team, right? The second is the quality of teachers. The beauty of online school is, and even today, we have teachers teaching from more than 15 to 20 different cities across the country, right? आज आप किसी भी फिजिकल स्कूल में जाते हैं, वहां पर जो टीचर्स हैं वो एक 5 किलोमीटर के दायरे से मिलती हैं, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द बेस्ट ऑफ फ्रेंचाइजीज, आई नॉट कोट द नेम, नॉट रिक्वायर्ड, एवरीबडी नोज. सो उन फ्रेंचाइजीज के भी 100, 150, 200 स्कूल्स होंगे अक्रॉस इंडिया, बट the franchisees within themselves do not have the same quality because the teachers aren't same across. So आज एक स्कूल की फ्रेंचाइजी जो दिल्ली के अंदर है या गुड़गांव के अंदर है, और वही फ्रेंचाइजी अगर दिल्ली से 150-200 किलोमीटर दूर कहीं पर भी होगी, there is a stark difference between the quality of education, the quality of teachers. And the third are the pedagogies. सिर्फ टीचर अच्छे होने से फर्क नहीं पड़ता, अच्छा पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है. And we make sure that the teachers, one, have the art of teaching online, and second, they are trained uh, so much so that they can create that engagement online. So today we are very confident, we proudly say that the quality of education that a parent gets in the premier institutes or the premier schools of the country, we are matching that quality of education. सो नाउ दिस इज अबाउट किसी भी पेरेंट के दिमाग में ये होना कि साइबोर्ड पे हम बच्चे को डालें तो क्या वो सिर्फ पढ़ाई में खाना पूर्ति करेगा या वो उस लेवल की पढ़ाई देगा. सो दिस इज व्हाई आई मेंशन्ड व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग, राइट? नाउ व्हेन वी कम फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पर्सन's पर्सपेक्टिव, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मॉर्निंग आवर्स की प्रैक्टिस, इवनिंग आवर्स की प्रैक्टिस, उसको न्यूट्रिशियस मील्स, बिकॉज डाइट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ अ हेल्दी स्पोर्ट्समैन, राइट? वो और उसके अलावा वो जो टाइम उसको बचाना है. आज आपको स्कूल के अंदर फिजिकल स्कूल में बच्चे को भेजना होता है तो आप सुबह 6:30 बजे से लग जाते हो. उठो, उसके बाद तैयार हो, तैयार के बस पे चढ़ो, 1 घंटे 20 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा स्कूल का डिस्टेंस होता है, वहां जाओ. उसके बाद पूरे के पूरे 8 पीरियड करो ना. उन 8 पीरियड के अंदर पढ़ाई के पीरियड 4 होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे पीरियड्स होते हैं जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं चाहिए, प्राइमरली फॉर द रीजन कि वो सारे पीरियड्स जो बाकी पढ़ाने वाले हैं वो स्पोर्ट्स फील्ड पे पढ़ रहा है, वो बाय डिफॉल्ट पढ़ रहा है. तो इसीलिए उसको 4 घंटे चाहिए, 4 घंटे भी पूरे नहीं, 4 पीरियड चाहिए, राइट? सो दोस 4 hours of study, and then again you get rest, you get home cooked food, and you go for evening practices. Now this is when the child is at home and practicing. आपको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज हितेश ऑल्सो मेंशन्ड, मल्टीपल ट्रायल्स देने पड़ते हैं, मल्टीपल टूर्नामेंट्स में जाना पड़ता है. उसको करने के लिए साल में 5, 6, 7 बार आप घर से बाहर होते हो, विच प्रैक्टिकली मीन्स कि अब आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते कि आप फिजिकल स्कूल में जा रहे हैं, राइट? लेकिन द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन स्कूल इज वी गो वेर एवर यू गो.
आपको कुछ नहीं करना, जहां बैठे हैं जब बैठे हैं, अपनी क्लासेस का टाइम टेबल आपका बना हुआ है, यू हैव टू जॉइन द रेलेवेंट क्लास नो मैटर वेयर यू आर, इवन थ्रू योर मोबाइल फोन, right? We are accessible on all platforms. So the beauty of online school is flexibility in timing, energy, and the biggest of all, when we started Cyboard, our vision was to take this quality at the cost which is almost 1/8 or 1/10 the premier institutes, right? सो अब आपके पास एज अ पेरेंट भी अगर आप सोचेंगे, आपके बच्चे के पास टाइम, एनर्जी, अच्छा खाना तो है ही है, आप इतना पैसा सेव कर लेंगे कि आपको उसकी जो अकेडमी की फीस है वो बिल्कुल नहीं चुभेगी। And you can now create a perfect balance by providing the best of academics and the best of training, because ये हम सब जानते हैं, कोई भी स्कूल किसी बच्चे को प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं करता, वो अल्टीमेटली अकेडमीज ही करती है। एंड दिस इज अ हार्ड फैक्ट, नो मैटर हाउ क्रूड इट इज, बट इट इज। एंड कोई भी स्कूल बच्चों को वो लेवल की ट्रेनिंग नहीं दे सकता, बिकॉज वो 2 बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए, 6 बच्चों के लिए वो फैसिलिटीज और टाइम क्रिएट नहीं कर सकते। And that is what academies are meant for. So that's why with us, a child gets time and energy and money for both things together. That is academics and sports. So इसीलिए आप वो binary choice से एक balance तक पहुंच सकता है बड़े आराम से। That was really insightful. I'm pretty sure our audience would have certain questions, and we'll address those later. But it's I mean everybody who has joined, even if you're a child, I mean you can go and speak to your parents about this as well. क्योंकि देखो हमारे देश को ना स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब वो और क्रिकेट के बियॉन्ड जाना थोड़ा सा वो भी जरूरी है। एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन वी क्रिएट, एंड फॉर दैट मैटर क्रिकेट में भी हम छोटे बच्चों को कहाँ वो सपोर्ट और सिस्टम दे पाते हैं, इवन दो इट्स वर्शिप्ड इन आवर कंट्री, है ना? सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड मिक्स ऑफ having a balance between academics and sports, and then preparing the child for both the things. अगर तो सक्सेसफुल हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर पढ़ाई तो है ही है। because and that's what the beauty of sports is, you know, it prepares you, जैसे आप ही बता रहे थे, it prepares you for failure from start, जो बहुत बहुत जरूरी है आज के टाइम में। so one last thing हितेश, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आप फुटबॉल ट्रायल्स कराते हैं, आपके पास स्पोर्ट्स के एथलीट्स, आई मीन आपके पास फुटबॉल के बच्चे आते हैं, एंड कुछ एक ट्रायल्स में जहां पर मैं गई हूँ वहां भी देखा है बच्चे काफी पैशनेट होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो अभी हमने डिस्कस करी, सोल्यूशन जो रजत ने ऑफर करा, आप क्या बोलना चाहेंगे उन बच्चों के माँ बाप को pertaining to about this online schooling, pertaining very specifically to cyborg, and pertaining to how they can approach their children's passion as well? Got it. So, see, Rajat gave a very 3 pointer, बहुत solid takeaway निकला है. You need energy, you need time, and then you need of course money to pursue sports professionally. अगर वो तीनों चीज via cyborg अगर वो additionally मिल रही है for the player, for the kid to pursue sports, then nothing like it. और कुछ चाहिए ही नहीं, because the kids have the passion. वो तो internally built हो नहीं, वो अंदर से ही आता है. It is not something which can be built and structured and trained towards it. So what we have seen, like I'll just give you 2-3 examples and you'll understand the problem. कि ट्रायल्स में तो बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद में ड्रॉप आउट होते हैं एट मेनी, लाइक आई गिव यू वेरी लाइव एग्जांपल, पिछले साल का ही है. देयर वाज दिस प्लेयर फ्रॉम दिल्ली, आई वुड टेक हिज नेम. सो he had got selected in, or rather got interest was generated by Kerala Blasters. वो वहां पे गया ट्रायल्स के लिए. दे हैड टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, मतलब दे लाइक द प्लेयर सो मच. वो वहां पे गया, वहां पे 7 दिन रुका, 10 दिन रुका. द कोच लाइक देम एक्सेट्रा. And then later on, because वो 12th grade में था, he simply did not take up that chance. जिसके लिए you know lakhs of players would rather die to get that chance, to get noticed by someone, by an ISL club, right from Delhi और सीधा केरला. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने तो फोकस किया है कि बच्चों को पेरेंट्स चांस नॉट अलाउिंग देम टेक इट.
यहाँ पे हो क्या, अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी दे आर अनेबल टू टेक दैट अप विद बोथ दी हैंड्स। क्योंकि यहाँ पे तो वो उसी के लिए ट्रेन कर रहा था, उसको तो प्रोफेशनल प्लेयर ही बनना था। सो it's a like Cyborg. I genuinely feel when we had first initially spoken with Rajat, and it is a big problem, and you guys are solving exactly that problem. वो सॉल्व हो जाता है तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम पेरेंट्स विल गिव 2 3 4 years मोर टू द प्लेयर टू परस्यू हिज पैशन, और उसमें से काफी सारे प्लेयर्स निकलेंगे फॉर श्योर। कुछ कुछ प्लेयर्स दे वुड लाइक, ये जो प्लेयर था पॉसिबली ये आईएसएल पहुंच जाता, या वी कुड हैव रिप्रेजेंटेड इंडियन टीम, देयर वाज सम प्रोबेबिलिटी वो आगे बढ़ता। ही वाज जस्ट 18, नॉट इवन क्रॉस्ड 18 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक ही वाज Wow. 17 years old। तो इट इज अ नीड। एंड जैसा रजत ने बोला, विद साइबोर्ड्स फोकस ऑन एजुकेशन एज वेल। हमने तो एक डायमेंशन लिया कि आपको टाइम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बट वो सेफ्टी नेट भी आप इतना स्ट्रांग बना रहे हो बाय गिविंग क्वालिटी एजुकेशन एट 1/8 और 1/10 the cost। I don't think there is anything else which is available currently in the country to which is creating that ecosystem to balance both। और अगर वो बन रहा है, and which you guys are already demonstrating, I think what I would recommend parents is, if your kid is going towards a sport, be it football or cricket or anything, जहां पे you need to give 2 3 4 more years more to him, you consider putting your child in cyborg और उसको टाइम दे दो, वहां पे टाइम दे दो, एनर्जी दे दो, और वो पैसे भी Right. डाल दो आप। यू नेवर नो इफ यू माइट एंड अप बीइंग द नेक्स्ट सुनील छेत्री और विराट कोहली। Wow, nice. That is really really great to hear. So with this, we actually come to an end of this amazing discussion that we have had. Vijay, Having. before we conclude, I would just make one more statement. So, uh, I would also like to emphasize the fact, as an academician as well, that if you are brilliant at sports and if you have represented your team at any level, that also is counted and is given due preference when you go to universities. Yeah, So, आज आप इंडिया में अब्रॉड किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, देयर आर प्रॉपर स्पोर्ट्स कोटाज। yeah, yeah, Right. तो ये तो अपने सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी। इंडिया के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा माना जाता है। आई माई सेल्फ एम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। सो देयर यू हैव प्रॉपर स्पोर्ट्स कोटाज। इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन यूनिवर्सिटीज, द बेस्ट ऑफ देम ऑल्सो एमआईटी की बात करते हैं, वो आपके स्पोर्ट्स के जो परफॉर्मेंस है उसको इतना ज्यादा महत्व देते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। right, Yes, you have to be good at academics, no doubts about that. But your sports performances matter a lot when you go for university admissions. So, if you could create a balance, you can reach a particular place in sports and academics. Please do that. Don't drop sports, because that is also helpful in your academic career. That is one. And the second thing is for life. आप so I'll give आज संडे है, I even in the morning I played cricket, right? So sports एक ऐसी चीज है जो आपको हर फ्रस्ट्रेशन, हर स्ट्रेस से बहुत दूर लेके जाता है। You might have heard thousands of people saying कि आप एक स्पोर्ट्स जरूर रखो लाइफ में, और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है when you are playing a sport, be it badminton, I have played badminton a lot, cricket a lot, उस टाइम पे आप उस स्पोर्ट्स के अलावा, उस शटल कॉक के अलावा, उस बॉल के अलावा, उस फुटबॉल के अलावा और किसी चीज पे ध्यान नहीं देते। बीइंग अ बिजनेसमैन, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से एंड वी रियली लुक अप फॉर दैट वन डे जब हम उस स्पोर्ट्स खेलेंगे, right, बिकॉज उस दिन हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम सारी टेंशन भूल जाते हैं, हम सब प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं, और हम सिर्फ गेम पे ध्यान दे रहे होते हैं। प्लीज, आप चाहे अपने बच्चे का करियर के लिए वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, लेकिन पैशन के लिए भी स्पोर्ट्स, कोई भी एक स्पोर्ट्स को डेफिनेटली जीवन भर उनके साथ चलाइएगा। एंड दिस any and every adult who is playing a sport today would definitely realize. right। Thank you. I'll just add, Rajat had said के so just recently IIT Madras has also declared वो लोग स्पोर्ट्स कोटा चालू कर रहे हैं। So like an institute like IIT Madras, based on your sports performances, they are ready to give admissions. So that is the first part. The second part is I'll just extend you with 3 examples. We had 3 players, Mongsu Aditya Rai, based on their footballing capabilities and somewhat of their academic, we
we were able to place 3 Indian players in US universities like last month on Wow. scholarship. They have got scholarship on their fees in second division NAIA colleges. So बाहर तो बहुत मैटर करता है ऑन देयर फुटबॉल सिर्फ उनका फुटबॉलिंग प्रोफाइल भेज के एंड दे हैव प्लेड ओनली एमेच्योर फुटबॉल इन इंडिया सो उस बेसिस पे 3 प्लेयर्स को हमने स्कॉलरशिप वी हैवंट येट डिक्लेयर्ड इट बिकॉज वी आर जस्ट अवेटिंग देम टू फ्लाई ओवर देयर बट बिकॉज रजत सेड मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ ये हो रहा है वी हैव स्टार्टेड दैट एंड उनका एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों देखा जाता है और दोनों के पूल में से यूनिवर्सिटीज आर रेडी टू गिव स्कॉलरशिप्स सो मॉनिटरी बेनिफिट तक हुआ है अभी आप सोचो वो फुटबॉल प्लेयर नहीं होते एकेडमिक्स में ही पढ़े होते वो गेट जीमैट के चक्करों में बैठे होते वो लोग अभी तक लेकिन यहाँ पे एक प्रोफाइल बना के शोकेस किया कोच को पसंद आया उसको लगा मेरे यहाँ पे मुझे चाहिए कोच कन्विंसेस द यूनिवर्सिटी टू ब्रिंग हिम ऑन बोर्ड और फिर उसका एकेडमिक्स भी देखा अरे एकेडमिक्स भी अच्छा है चलो ठीक है और स्कॉलरशिप दे देते हैं फुटबॉल तो है ही है सो देर इज अ वेरी क्लियर कट पाथवे एंड इट्स जस्ट जो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया इट्स नॉट अ बाइनरी चॉइस नाउ आप आओ साइबोर्ड में बैठो 12th तक रहो एंड देन यू टेक योर करियर अहेड irrespective you want to take it up professionally or not. Great. Thank you so much for that, those insights. So, before we end, we are going to take up some questions, Hitesh and Rajat both, and I'll direct them for you to pick it up. So, I have Abir Sethi with you. He has 3 questions. So, audience, this is for you as well. If you have any questions, do type it in the box, and if it is for Hitesh or Rajat, and then we would be more than happy to address those. तो आप लोग क्वेश्चन है अगर आपके तो आप अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके बाद हितेश या रजत उसको आंसर कर देंगे सो अबीर का क्वेश्चन है एंड देयर लाइक 3 questions 3 questions. so how can someone get scouted to play professional football in Europe from India? That is one. And Yeah. then the second, he says, I'm in 10th. He is in grade 10. I have no academy around me and no professional coaches. I've attended ICAF trials, but I have Okay. not got selected. So how can I join Cyboard or any other academy? Just to clarify, Abir, Cyboard is not an academy; it's a school, बच्चा. So it's an online school जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं. So it is purely for education. IKF is definitely for football. So Hitesh would answer that questions. He says that his parents do support him, but he does not have an academy. Okay. So, Abir, I'll tackle the first question first. How can someone get scouted and play professional football? Okay. So, in Europe, Europe pathway to Europe is pretty difficult, Abir. You're not competing with your with the players in your locality. It's basically you are competing players globally. And Europe being the pinnacle of football, it is difficult for Indian players to go over there. So if you want to get scouted in Europe, see the journey is hard. Obviously, it's not that it's not possible. Players have started going abroad, but the expectations has to be right. You won't be able to play in Premier League or La Liga or Serie A, topmost leagues over there. For us, for Indians, considering we are above 100 in our FIFA ranking, acquiring a visa is the first part, and second part is generating interest from Europe for you. So it's a long way ahead, and as you said, you have already completed 10th, so you just have 2 years for with you to showcase yourselves abroad, and that too you have to go to countries जहाँ पे लोअर डिविजन एक्टिव है और वहीं पे सिलेक्शन हो पाएगा सो ऑब्वियसली आई डोंट हैव योर प्लेयर प्रोफाइल करंटली फ्रंट ऑफ मी बट यू हैव क्लियरली सेड यू हैवंट गेट अब स्काउट नहीं हुए आईकेएफ ट्रायल्स में it means that there's a lot of improvement that needs to be done because we scout for Indian clubs keeping that benchmarks in mind. So Europe is sorry to be blunt, but it's a distant dream currently. You need to work very hard for coming 2 years in order to go over there. So, and the last part was you don't have an academy. So there are currently hundreds of online academies अभी जहाँ पे जो आप घर पे कर सकते हो. YouTube पे तो free है ही, but there are hundreds of apps which currently provide that kind of training which you would get over there. So consider going through that first. But you would need a coach on ground. वो घर पे बैठ के होगा नहीं. So you definitely need to find an academy. The next best possible for you would be once you are done with your 10th grade. लुक फॉर अ रेसिडेंशियल सेटअप जहाँ पे आपको फोकस्ड मैनर में ट्रेनिंग मिलेगी अदरवाइज वहीं पे हो पाएगा अदरवाइज बीइंग एट होम इट इज डिफिकल्ट बिकॉज you don't have age on your side. Thank you so much for that, Hitesh. I hope it answers Abir's question. Suresh Nayak has raised his hand. He would want to answer.
Suresh, could you type the question? सुरेश, आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो या फिर मैं आपको अलाउ टू टॉक कर सकती हूँ? हाय सुरेश, यू कैन स्पीक नाउ. Yes, yes, ma'am. हाँ जी बच्चा, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए. मैम, कैसी हेल्प हो सकती है साई बोर्ड से? क्या हम ओपन करने जा रहे हैं, कोई एकेडमी ओपन करने जा रहे हैं? क्या बेटा? क्या मैम एकेडमी ओपन करने जा रहे हैं हम लोग साई बोर्ड वाले? साइबर अकेडमी नहीं ओपन करेगी. सो रचित, आप आंसर करना चाहेंगे ये क्वेश्चन प्लीज? या हाय. सो बेसिकली साइबोर्ड एक प्रॉपर स्कूल है, साइबोर्ड एकेडमी नहीं है. सो एकेडमी तो आपको अदरवाइज ही ज्वाइन करना पड़ेगा आपके लोकल एरिया के अंदर. बट साइबोर्ड एक ऑनलाइन स्कूल है विच प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी कि आप फिजिकल स्कूल में अपना टाइम और एनर्जी और मनी आप सेव कर सकते हैं. आप ऑनलाइन स्कूल में पढ़ाई करते हुए किसी लोकल एकेडमी में जो आपके शहर में हो, वहां पर आप उसके अंदर अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो साइबोर्ड कोई एकेडमी नहीं खोलता. साइबोर्ड एक फुल फ्लेजेड ऑनलाइन स्कूल है जहां पर प्रॉपर ग्रेड्स के अंदर पढ़ाई होती है. एंड एकेडमी तो आपको लोकली अपने शहर के अंदर ही ढूंढना होगा. जैसे हितेश ने आपको बोला कि देर आर एप्स विच हेल्प यू विद द बेसिक इंस्ट्रक्शंस, या फिर आपको रेजिडेंशियल एकेडमीज ज्वाइन करनी पड़ेंगी जहां पर प्रॉपर फोकस होता है फुटबॉल के ऊपर या किसी भी स्पोर्ट के ऊपर, और वहां पर पढ़ाई भी साथ में होती है. इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी, आई वुड रिक्वेस्ट हितेश की बाद में, या आप वी कैन प्रोवाइड सम ईमेल आईडी जहां पर स्टूडेंट्स कैन रीच आउट, सो दैट अगर कोई स्पेसिफिक एप्स या स्पेसिफिक अकेडमीज के या रेजिडेंशियल स्कूल्स के नाम हों जो कि हम अपने ऑडियंस को बता सकें, तो वो भी अच्छा रहेगा. सो दैट दे कैन डाउनलोड दोज एप्स और दे कैन रीच आउट टू दोज रेजिडेंशियल अकेडमीज जहाँ पर वो फिर खेल पाए अगर उनके शहर के अंदर या उनके पर्टिकुलर लोकेलिटी में कोई अकेडमी ना हो. Sure. Great. Abir had some questions, but Abir बच्चा, what I will do is ना, आपकी जो डिटेल्स हैं वो हितेश की टीम को फॉरवर्ड कर देंगे and they will be able to guide you better, है ना? So Yeah. ऐप सजेशंस वगैरह जो जितना भी है वो सारा हम आपको अलग से भेज देंगे. IKF की टीम आपको भेज देगी, ठीक है? Is there anybody else who has a question? So it seems like we are almost at the end of our discussion. It was really fruitful. Thank you so much, both of you, for taking out time on a Sunday afternoon and speaking to all of us and having those beautiful discussions that we just had. Uh, Ending notes from both of you, that will be great. So हम बात कर रहे थे sports and academics, should it be a choice? Now I ask you that question, Hitesh, should it be a choice? Or both can definitely go hand in hand together. And before meeting Cyboard, we had that query, and many parents used to ask us. And but now we have the answer. So of course, both can go hand in hand. आप फुटबॉल परस्यू करो, एनी स्पोर्ट परस्यू करो, एजुकेशन जो आपका सेफ्टी नेट है वो साइबोर्ड क्रिएट कर देगा. So I genuinely urge, had I had an option during my younger days, I would have definitely taken that up for sure. Great. That's great to hear. And Rajat, what do you think? Should sports or So academic be a uh, choice? सो बेसिकली इट शुडंट बी अ चॉइस एट ऑल. मैं तो ये कहता हूँ कि पहले जब ये चॉइस नहीं भी अवेलेबल थी ऑफ एन ऑनलाइन स्कूल, तब भी लोगों को पैशन और स्पोर्ट्स डेफिनेटली परस्यू करने चाहिए ही थे. बट नाउ सिंस पीपल हैव दिस ऑप्शन ऑफ एन ऑनलाइन स्कूल एंड दे हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज लाइक IKF कमिंग अप, जहाँ पर उनको अपना टैलेंट दिखाने के और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. पहले ये अपॉर्चुनिटीज भी नहीं हुआ करती थी. So opportunities like IKF have also started coming up over the last 3-4 years, and so have we. So I see in India where we have now achieved or created an option
for balancing sports and academics. And I am so hopeful that one, India represents football on a global level in times to come and reaches a spot. So I don't know how many people know about this, but IKF was a partner to the movie called Maidan, jo Ajay Devgan ki aayi thi. And when they have reached IKF, that means they have specifically reached out to IKF, which practically means they also want to promote football at a countrywide level. And now, since these opportunities are available, I request all the parents कि बच्चों को please खेलने दें, अच्छे से पढ़ने दें, साइबोर्ड पे पढ़ लेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है. And trust me, आपके academics would be sorted. There would be no problem at all. But please ask your children to start, or rather, I would say, please push them young for sports. 6 साल के बच्चे को 7 साल के बच्चे को स्पोर्ट्स खेलने के लिए दीजिए और अच्छे से खेलने के लिए दीजिए, rather than asking them to pursue it at the ages of 10, 11, 12 or rather 12, 13, 14. क्योंकि जो सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है वो नेचुरली सीखता ही कम एज के ऊपर है. जब वो कम एज का होता है वो सबसे ज्यादा ग्रास्प करता है. धीरे धीरे ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है. So it's my request that please create this balance, and it is no more a binary choice. Yes, that balance is available, and we request you all to choose for that balance and give your child the best of both. Thank Thank you. you so much, Hitesh and Rajat. Thank you so much for these great insights. I hope it was a great value add for the parents. For anybody, parents, what we would do is we would share a link of this webinar with you as well. So अगर आपको अपने like-minded parents लग रहे हैं, अपने friends, family, acquaintances, colleagues जो इस dilemma में है कि sports या academics में choose करना चाहिए, जो जानना चाहते हैं क्या है choice, you can always share this along. And we would love to have such beautiful discussions in the future as well. Thank you so much, Hitesh, and thank you so much, Rajat, for joining in. Thank you, Vijay. Thank you Thank so you. much. Thanks, Thank you. everyone. Hi, Rajat.